So we will start discussion the first year chapters, and then after we will move for the second years. Okay, so let's go for the discussion of the first chapter. The first chapter is standing up for yourself. Now, yeah. So look into this particular story. You can consider that it is an autobiography. Why it is an autobiography? Because it is written in the it is written about the writer's childhood age. So who is the writer? We can find out. The writer is Yevgeny Yevtushenko, right? Yevgeny Yevtushenko. So if you pronounce it, you can pronounce like Yevtushenko, right? So and the topic name is standing up for yourself. Now, when you talk about the title of the topic, standing up for yourself, what is it actually? Now, standing up for yourself indicates that okay, uh, whenever you do anything, that maybe means when you write any poems or prose, or whenever you means take any risk, so you must back to it or called as आप उसके साथ खड़े रहो, right? So अगर आपने खुद किया है तो आपको खुद उसके साथ खड़ा रहना चाहिए. So that is what called as a standing up for yourself. So यहाँ पे ये टाइटल क्यों दिया गया है, स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ ना. ये जो टॉपिक है वो राइटर के मीन्स बचपन के टाइम पे है. सो राइटर अपने बारे में डिस्कस करते हैं कि जैसे मीन्स बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट भी यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है कि किस हिसाब से राइटर अपना जो मीन्स what do you say that means how did the writer regain means to got back to get back his courage to win over fear, right? So that's what he describes, and he states that means how he has written one of the poem, and for that also he got the punishment, right? But he did not means he did not ignore that. He did not means uh, he did not go back. He stood. He stood for his writing, right? And that's what he tries to point out. That standing up for yourself. So if you do something, you must stand for it. Let's go to the discussion of this particular story. So let's learn about the writers. So who is the writer? Yevgeny Aleksandrovich Yevtushenko. So who is he? He was born in the year of 1933. He's a Russian poet. वो एक रशियन पोइट है, नोबलिस्ट भी है, एसेइस्ट भी है, ड्रामाटिस्ट भी है, स्क्रीन राइटर भी है, एक्टर, एडिटर एंड डायरेक्टर ऑफ फिल्म्स. So means he is means you can say that all in all a kind of a jack of all trades, right? So उस हिसाब से देखा जाए so उनका जो मेन सेक्शन है वो लिटरेचर के सेक्शन पे है. Because he is a poet, he is also a novelist, essayist, and dramatist. So he also writes, he also acts, and he also modifies, edits, and director of films. So you would find out in all these prose, poetry, and stories. So means two things are there. The first thing is called as a um, each of the stories segregated into different units like unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, even it extends to 1 to 4 unit, or sometimes you would find out your 6 units are there. So कभी कभी तो 4 यूनिट होते हैं, कभी कभी 6 यूनिट भी, और कभी कभी 7 भी हो सकते हैं. बहुत बड़े बड़े टॉपिक होते हैं तो उसको यूनिट में सेग्रीगेट किया गया है. ये पहला चीज है. दूसरा चीज ये है कि हर एक यूनिट
मीन्स जब टेक्स्ट डिस्कस होता है तो उससे पहले वार्म अप दिया जाता है. सो व्हाट इज दैट वार्म अप? ना, द वार्म अप इज ऑल अबाउट द जिस्ट ऑफ दैट यूनिट, कि उस यूनिट में क्या जिस्ट एक्चुअली है, उसी के ऊपर दिया जाता है. सो अगर कोई वार्म अप को पढ़ता है अच्छे से, तो वार्म अप मेक्स हिम अंडरस्टैंड दैट व्हाट द यूनिट ट्राइज टू डिस्कस फर्दर. ठीक है, और आगे और क्या दिया गया है उसके ऊपर. चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ. लेट्स सी दैट द फर्स्ट वन, यूनिट 1, वार्म अप. हैव यू एवर कम अक्रॉस अ चाइल्ड डेजिटेड बाय पेरेंट्स? तो यहाँ पे मीन्स एक वर्ड दिया गया है, जैसे कि द वर्ड कॉल्ड एज ए डेजिटेड. सो डेजिटेड का मतलब क्या होता है? डेजिटेड का मतलब होता है कि किसी को छोड़ देना, राइट. एक वर्ड डेजर्ट है जो कि नाउन है, जिसका मतलब होता है बैरन लैंड, मतलब मरुभूमि. सो whereas और एक वर्ड है दैट्स कॉल्ड एज ए डेजर्टेड, सो विच इज अ वर्ब. एंड ये डेजर्टेड का मतलब होता है कि किसी को छोड़ देना, या मीन्स who was left alone, or you can say that उसके पेरेंट्स उसको छोड़ दिए, उस हिसाब से. तो यहाँ पे इफ यू सी दैट राइटर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कभी आपने देखा है कि किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया है, राइट. सो और कॉल्ड एज एक बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है, तो हाउ डज ही और शी ग्रो अप? अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है, वो बच्चा छोटा है, तो वो कैसे ग्रो अप करेगा, राइट. इट इज अ क्वेश्चन. सो हु लुक्स आफ्टर हिज और हर एजुकेशन? कौन उसके एजुकेशन को मीन्स कौन उसके एजुकेशन को देखेगा, कौन उसके हेल्थ को देखेगा? सो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं. हु लुक्स आफ्टर हिज और हर एजुकेशन? If you have not come across such an urchin in real life, if you have not come across such an urchin in real life, तो ज्यादातर कुछ वोकैबुलरी होते हैं जो कि मीन्स सबको पता नहीं होता है. तो उस टाइम पे हमें करना क्या चाहिए ना? वी नीड टू मीन्स गो विद द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वोकैबुलरी on the basis of the sentence which is written, right. So the author here made a question: if you have not come, or made a statement that if you have not come across such an urchin, such an urchin means we can say that such a situation in real life, she the harrowing experience. So harrowing experience का मतलब होता है कि terrible experience of growing up in the movie called Slumdog Millionaire. So आपने Slumdog Millionaire तो देखा होगा, वो हॉलीवुड में बनाया गया था, और बॉलीवुड में भी उसको मीन्स डब किया गया था 2008 में. सो जिसको डायरेक्ट किए थे डैनी बॉयल. सो ये जो स्लमडॉग मिलियनेयर है मूवी, सो इस मूवी में भी आपको मिलेगा एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स नहीं है, वो किस हिसाब से यहाँ वहाँ घूमता रहता है, कैसे वो मीन्स अकेले होता है, कैसे उसके दोस्त लोग होते हैं, कैसे वो मीन्स बस्ती में रहता है. सो एंड फाइनली मीन्स वो मिलियनेयर होता है, राइट. उसके एक्सपीरियंस के वजह से कैसे वो केबीसी में ज्वाइन करता है, और कैसे वो सारे क्वेश्चन के आंसर दे के मिलियनेयर होता है. सो ये जो मूवी है स्लमडॉग मिलियनेयर, विच इज रिटन बाय डैनी बॉयल, हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, एंड को डायरेक्टेड इन इंडिया बाय लवलिन टंडन, राइट. सो उस मूवी को अगर देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि मीन्स how a child grow up without his parents or her parents, right. So it is an adaptation of the novel Question and Answer, or Q&A, 2005, by Indian author and diplomat Vikas Sorum. So ये जो मूवी मीन्स स्लमडॉग मिलियनेयर है, वो कोई एक नोवेल से लिया गया है, जो नोवेल का नाम होता है कि Q&A, राइट. 2005 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसको इंडियन ऑथर एंड डिप्लोमेट विकास स्वरूप ने लिखा था. ठीक है. सो लेट्स रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट एंड नोट हाउ अ रशियन चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट अप इन द स्ट्रीट. तो अब हम
मीन्स ऑथर के लिखे हुए टेक्स्ट को चलते हैं. सो जो कि ऑथर जिसके बारे में कहा गया है, ऑथर जो कि एक रशियन चाइल्ड है, राइट. और वो किस हिसाब से मीन्स बिना पेरेंट्स के स्ट्रीट में कैसे वो बड़े होते हैं, उसी के ऊपर. So, the first unit, let's begin this. In 41, I was living alone in an empty flat in a quiet Moscow street. Now, the question comes out, what do you mean by in 41? So, it would be called as the year, right? So, we could say that in the year of 1941, the writer who was a child and he was living alone, वो अकेले ही रहते थे एक एम्प्टी फ्लैट में. सो कहाँ पे? अ क्वाइट मस्को स्ट्रीट. सो ये जो स्टोरी लिया गया है कहाँ पे? as you know that the author is a Russian, so he was living in Moscow street, right? So and he was living alone in an empty flat. So the author stated that, author यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि my parents were divorced. Sometime also we pronounce divorced, right? But it is the appropriate way to pronounce the word is called as a divorced, right? So my parents were divorced, and my father was somewhere in Kazakhstan with his new wife and their two children. I seldom received letters from him. So the author stated that, author यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस हिसाब से क्यों वो अकेले मॉस्को स्ट्रीट में रहते हैं, क्योंकि उसके उनके जो पेरेंट्स हैं वो सेपरेटेड हुए हैं. द मीनिंग ऑफ डिवोर्स, divorce is called as a separated. And ऑथर के पेरेंट्स वो काजाकिस्तान में रहते हैं, राइट. उनके with his new wife and their two children. It means author's father was separated. He was living in Kazakhstan with his another wife and their two children. So I seldom received letters from him. The author said that कि कभी कभी उनके पेरेंट्स उनके फादर के पास से उनको लेटर्स मिलता है. The author stated the another one, he told about his mother. He said that his mother was at the front. So at the front means called as राइटर के जो मदर थे वो बॉर्डर एरिया में मीन्स काम करते थे. शी हैड गिवन अप हर वर्क एज अ जियोलॉजिस्ट, राइट. सो माय मदर वाज एट द फ्रंट. सो फ्रंट का मतलब होता है कि मीन्स बॉर्डर एरिया. सो बॉर्डर एरिया में रहते थे. सो एंड शी हैड गिवन अप हर वर्क. सो गिवन अप का मतलब होता है कि मीन्स क्विट कर देना. सो राइटर के मदर पहले क्या थे? न जियोलॉजिस्ट थे. सो एंड आफ्टर दैट टू बिकम अ सिंगर एंड वाज गिविंग कंसर्ट्स फॉर द ट्रूप्स. सो means after leaving the job of geologist, so she became a singer and was giving concerts for the troops. So concerts का मतलब होता है कि कोई एक ग्रुप में troops का मतलब ग्रुप. So group of what? Group of musicians, singers. So उस ग्रुप में मीन्स उन्होंने पार्ट किया था और उस ग्रुप के लिए वो गाना गाते थे, राइट. So she became a singer and was giving concerts for the troops. बहुत सारे concerts में वो part ले रहे थे. The author stated, so after telling about his father and mother, so he said, my education was left to the street. So as you know that कि मीन्स उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे, तो उनके पापा काजाकिस्तान में रहते थे और उनके मदर बॉर्डर एरिया में रहते थे. तो उस टाइम पे ऑथर कहाँ पे रहते थे? ऑथर मस्को के स्ट्रीट में अलोन लोन मीन्स अकेले ही रहते थे. द ऑथर स्टेटेड दैट कि माय एजुकेशन वाज लेफ्ट टू द स्ट्रीट. लेफ्ट टू द स्ट्रीट मतलब ही सेड दैट कि जो भी कुछ उन्होंने सीखा वो कहाँ से सीखा? स्ट्रीट से ही सीखा, राइट. दैट इज व्हाई he said street का मतलब कहाँ क्या होता है? So you can say that गली, right. गली मोहल्ले. So जहाँ पे ऐसे वैसे घूमना, तो वहीं पे. So author यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि his education was left to the street, right. The street taught him
The street taught him what? Not to swear, to smoke, speak elegantly through my teeth, and to keep my fist at the ready, a habit which I have to this day. So जब वो छोटे थे वो डिस्कस कर रहे हैं कि किस हिसाब से वो मीन्स स्ट्रीट में बड़े हुए हैं एंड स्ट्रीट ही उनको बहुत सारी चीजें सिखाया जैसे कि कैसे प्रोमिसेस करना और कैसे स्मोकिंग करना कैसे स्पीड करना स्पीड का मतलब होता है थूकना और मीन्स एलिगेंटली थ्रू हिज टीथ सो दांत के बीच से मीन्स थूकना स्टाइलिश की तरह एलिगेंटली का मतलब स्टाइलिश होता है एंड टू कीप हिज फिस्ट एट द रेडी और हमेशा रेडी रहना क्या करने के लिए झगड़ा करने के लिए सो कीप हिज फिस्ट एट द रेडी मीन्स ऑलवेज रेडी टू फाइट राइट अ हैबिट विच आई हैव टू दिस डे तो उस टाइम पे उन्होंने ये सारा चीज लर्न किया था The author also said, the street taught me not to be afraid of anything or anyone. So street से उन्होंने और भी कुछ अच्छा हैबिट्स लर्न किया था. What are they? ना कभी भी किसी से डरना नहीं. The street taught him not to be afraid of anything or anyone. This is another habit I have kept. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, the author stated about means these are the things he learned from the street. The author also added, I realized that what mattered in the struggle for life was to overcome my fear of those who were stronger. So, author यही स्ट्रीट से मीन्स ये सारी चीजें लर्न की सो उनको रियलाइज हुआ कि क्या कि अगर मीन्स लाइफ में स्ट्रगल करना है राइट सो और लाइफ में अच्छे से जीना है तो आपको करना क्या होगा ना यू हैव टू ओवरकम ओवरकम मीन्स व्हाट यू हैव टू फॉरगेट और यू हैव टू इग्नोर और यू हैव टू मीन्स विन विन ओवर योर फियर आपको अपने डर से जीतना होगा सो डर किसके लिए नाउ दोज ऑफ द पीपल हु वर स्ट्रॉन्गर सो जो लोग स्ट्रॉन्गर हैं जो चीज आपको हमेशा डराता है जो लगता है कि ये आपसे भी बहुत यू नो स्ट्रॉन्गर है राइट तो उसके ऊपर आपको मीन्स क्या करना चाहिए आपको विन ओवर करना चाहिए या जीत हासिल करना चाहिए राइट दैट इज व्हाट he said. Now, this is something means we learn from the first unit. So चलिए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं सो माय सजेशन इज दैट जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसका मीन्स मीनिंग मैंने आपको पढ़ाते वक्त कहा भी था तो उसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा फ्रंट फ्रंट का मतलब होता है प्लेस वेयर टू आर्मीज आर फाइटिंग इन अ वॉर सो यहाँ पे कहा जाता है बॉर्डर सो कंसर्ट कंसर्ट का मतलब होता है म्यूजिकल एंटरटेनमेंट यूजुअली गिवन इन अ पब्लिक हॉल एलिगेंटली जिसका मतलब होता है कि शोइंग अ गुड सेंस ऑफ स्टाइल राइट नाउ सो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए जैसे कि इज द नरेटर अ चाइल्ड और एन एडल्ट नरेटिंग हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस सो ऑब्वियसली वी कैन से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि narrator is an adult while he is narrating his childhood experience क्योंकि जब वो बड़े मीन्स बड़े हुए हैं तो तभी उन्होंने मीन्स ये जो मीन्स बचपन वाला एक्सपीरियंस को अपने मीन्स अपने बुक में लिखा है सो नेक्स्ट इज डज द नरेटर हैव हैप्पी एक्सपीरियंसेस इन हिज चाइल्डहुड we can say that the narrator doesn't have any happy experiences in his childhood or called as a no the narrator does not have happy experiences in his childhood why क्योंकि हमें पता है कि the writer stated about that how he was living alone in the Moscow street and his father and mother both were separated. Father was living in Kazakhstan, mother was living in at the front. So they were separated and they also went through the different profession
So he was alone in the Moscow street, and whatever he learned from the street. So nobody was there to care him, right? तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि the narrator doesn't have any happy experience in his childhood. What was his relationship with his father? So we can say that his relationship with his father uh, means rarely his father, who was living in Kazakhstan, was giving him means letters, right? But not always, uh, rarely or often, rarely or sometimes. So now, question number 4: how did his mother spend her time? So we could say that his mother, uh, who spent her time um, by uh, his mother spent her time um, working in a concert for the troops and um, working for the concert as a singer in a troupe, right? So this is the way she spends her time. What does my education was left to the street mean here? So अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि means the author wanted to say that he learned means most of means life's lesson. He learned most of his life's lesson from the uh, street itself, right? And as nobody was there to take care of him, so that's why means he learned some of the bad habits and some of the good habits also, you can say. So like the bad habits called as uh, spitting elegantly through the teeth, smoking, and always ready to fight. All such kind of a bad habits he learned, right? So he was, you can say also uh, he was not getting a good education, even you can say in his childhood days or during the time of 1941, right? So, what were the two? Okay, next question is 6. What were the two habits that remained with him all his life? So, यहाँ पे अगर देखा जाए दो हैबिट अगर पॉइंट आउट किया जाए, एक है कि मीन्स कभी किसी से डरना नहीं है, और दूसरा चीज है मीन्स अगर लाइफ में स्ट्रगल करना है और लाइफ में अच्छे से जीना है, देन यू हैव टू डू व्हाट. So the author stated that to overcome his fear of those who were stronger. So, and first thing is called as a not to be afraid of anything or anyone. Right? किसी से डरना नहीं है, और means second is called as a overcome his fear of those who were stronger. So ये दो means lessons or habits उसके साथ हमेशा लाइफ में रहा, right? So the two habits that remained with him all his life was called as never afraid of anyone or anything. So, and overcome his fear for anyone who was stronger, right? So that is what the two habits. Question number 7. What, in your opinion, was the best lesson that the street taught to the narrator? What, in your opinion, was the best lesson that the street taught to the narrator? So हम कह सकते हैं the best lesson that the street uh, uh, taught to the narrator was never afraid of anyone or anything, and to overcome. Not even that one particularly. So हम ये कह सकते हैं कि means in the struggle for life was to overcome his fear of those who were stronger, right? तो बेस्ट लेसन यही है कि means जो उन means अगर कोई चीज उनको डराता है तो उस डर के ऊपर उनका जीत होना चाहिए. ये सबसे बड़ा लेसन मीन्स जो कि नैरेटर स्ट्रीट से लर्न किया है. ठीक है. सो दिस इज
the first unit. So you can also move to the second unit after this video. Thank you. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो you can make a comment. Thank you.